बर्थडे बर्थडे आज है मेरा बर्थडे गिफ्ट मिलेंगे बर्थडे बर्थडे गिफ्ट मिलेंगे बर्थडे बर्थडे आज है मेरा बर्थडे. Hey guys, good morning. So, special day today. Today is Pooja's birthday. So, 7th of April. We kind of wanted to celebrate it, outside our house somewhere else. जल्दी से कोई प्लान नहीं बन पाया तो हमने सोचा यार क्या करें चलो कहीं कोई 5 स्टार होटल में जाके रुक जाते हैं वीकेंड पे एज यूजुअल सो आई वाज लाइक कि वेयर टू गो एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स ऑन गाचीबोली रोड हैदराबाद. राइट. सो मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट का सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे द रूम सेटअप्स और द स्टे सेटअप्स आर लाइक an apartment, like a flat, right? तो यहाँ पे they have studio apartments in 1 BHKs and 2 BHKs and 3 BHKs and that's it, right? And the least is I think the studio apartments and then the 1 BHK and then the 2 BHK and that's how it is. So I'm gonna show you the room and it's so well maintained and everything. So when I came inside I was like, hey मेरे को ऐसा apartment चाहिए भाई ये room मुझे दे दे मैं अकेला रह लूँगा. So but I'm gonna show you around. So let's just see the room now. Sure guys, let's get a room tour quickly. So as you enter, on the right side you have a place to keep your stuff. Generally, a shelf to keep your bags and all that stuff. This is a place to keep your shoes. I've kept my shoes over there. Yes. Now, as you come in over here, as I said, this is an apartment setup, right? So right over here on the left side is your kitchen. So, your inside oven with your chimney and all that stuff over here, right? And over here, if you see, they have all this set up. Yeah. Right. And on the left side is your fridge over here. So, right over here. And if you come to the right side, you have a sink to wash dishes. Here there is a dishwasher. And the best part is, इसके अंदर अगर आप देखोगे, Scotch Brite Scrub Pack. अगर यहाँ पे पैसे ना देना पड़े और या फिर अगर पैसे ना दे पाओ मैरियट में तो ये इसी से आपको बर्तन धुलाएंगे. और हाँ, one thing I forgot, I mean, they are charging us maybe 19,000 or 19,500 I think for a room for a night. Why this water filter man? मतलब ये तो मैं घर पे भी यूज़ नहीं करता हूँ, घर पे भी RO रखा हुआ है. So weird. I mean, could have given an RO. You've given this fancy, inset induction oven and, this is microwave also. You guys must have seen beside the fridge and all that. But ये क्यों है भाई? But anyways, चलो जो है सो है. I mean, look at the fancy thing. So what happens is, let's say, let's talk about this, right? If you take this tap, so if you open this, the water comes out. And there is this switch over here. If you press it this way, now it's hot water coming out. Right? It's that fancy. But यहाँ पे पानी के लिए भेज. Anyways, शायद इनका टाई अप होगा. ये भी 25 रुपये में ये कैन खरीदता है. 150 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है एक कैन का. Anyways, चलो. Oh, and also from the right side, if you actually open this door, there is a washing machine over here. So this is a front load washing machine. Weirdest brand though, but whatever. I mean, it's there. I mean, it's all set up. All you need to do is just hit the power button over there and you can start washing things. So, the usual apartment setup. Anyways, so coming off to the living quarters or the living space over here. So if you look over here, this is the TV, the big ass TV, with the TV cabinet over here. And you have a huge L-shaped couch over here with a nice center table. The backdrop of the couch is really nice. Over here you have a dining table which is a four-seater, and there is like this setup of 3 lights on top of the dining table, which is really nice. Right, but it's just something that's really fancy. And over there is like an entire wall window, right? So or rather, a glass wall or whatever you call it. I'm not sure, like whatever the technical term is. But this is a 1 BHK setup that we have chose. So if you come in over here into the bedroom, that is your, full length mirror. Feels like an influencer looking at that with a phone
in hand. This is your bed with your two nightstands, the usual stuff. And if you look right in front of the bed is another TV with the TV setup, the cabinet and everything, and a lot of balloons and everything over here because it's Pooja's birthday. That they are kind of complimenting us with all this, and there's also a note kind of wishing her birthday and all that over there. And over here is the washroom, which is closed because someone's inside. Shh, koi hai. Anyways, jokes aside, yeah. So over here you have a couple of other stuff, and there's a walk-in closet over there as well on the right side of the mirror, and yeah, that's how it is. Okay, this is how influencers feel with the phone in hand looking at the mirror. Okay, chalo guys, I'll see you again in the evening once I go out for dinner or something. And by then, till then, as my colleague says, toodles. यहाँ पे आप देख सकते हो आगे हमारे खाना. So I had fried prawns, kung pao chicken and curd rice for Pooja. Got a Corona for me and a LIT for her. चलो आगे मिलते हैं खाना खाने, बहुत भूख लग रहा है. तो guys, the funny thing, I generally drink sparkling water. तो यहाँ पे I've ordered sparkling water, right? तो they actually forgot to put the lemon slice in it. मैंने बोला, उसने इतने बड़े प्लेट में एक लेमन का स्लाइस दे के गया. Which I appreciate actually, but still, it's quite surprising. Generally, what they do is they serve it in a serving plate. But anyways, ठीक है, चलो, good stuff. देखो कितना अच्छा धूप आ रहा है. सही लग रहा है. So morning guys, second day at the Marriott Executive Apartments. So I know a little bit boring हो रहा है ना vlog ये. थोड़ा सा रूम दिखाना एंड खाना दिखाना एंड ऑल दैट. सब ऑफ यू बी लाइक देखो रईस ही दिखा रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ you communicate and get benefits from 5-star hotels or hotel chains. ये मेरे को बात करनी थी. So what happens is all these 5-star hotels, आप ताज ले लो, आप मैरियट ले लो, आप ITC ले लो, हयात ले लो, इन सब का एक ही बात है, दे हैव अ मेंबर प्रोग्राम, राइट. ताज का एक मेंबर प्रोग्राम है जिसमें यू कैन पे, सो इट्स लाइक 25,000 आई थिंक यू हैव टू पे एंड यू कैन बिकम लाइक अ प्रीमियम मेंबर और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट समथिंग दैट इज़ मैंडेटरी. बाकी सब जो मैरियट ले लो आप, हयात ले लो, पार्क ले लो, ITC ले लो, इन सब जगहों में ट्राइडेंट मतलब ओबेरॉय ग्रुप ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट. इन सब जगहों में ना ये जो मेंबरशिप है दिस इज़ फ्री. व्हाट हैपन्स इज, अगर आप पहली बार कभी कॉल कर रहे हो उन लोगों को, उनके यू विल फाइंड देयर नंबर्स ऑनलाइन और एनी ऑफ द होटल्स यू कैन कॉल. द वे दैट यू टॉक, द वे दैट यू कम्युनिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. उससे बहुत पता चलता है कि अगर आप प्रो हो या फिर आप एकदम न्यूबी हो, राइट, एकदम नूब हो. सो communication is the key, as I always say, be it in your professional or personal life. The same thing over here as well, right? So what happens is when you call, right, let's take this example, right? Let's say I called this place, right, Marriott Executive Apartments. I found the number online. I generally have these saved, but anyways, आप गूगल करोगे, आपको गूगल में मिल जाएगा नंबर, राइट. उसमें क्या होगा, कॉल करने के बाद ही वो उठाएंगे रिसेप्शन डेस्क पे, फ्रंट डेस्क पे उठाएंगे वो लोग को फ़ोन आपके. आप उनको बस ये बोलो, अगर आपको रूम का चार्जेस जानना है या जो भी हो, आप उनको बस सिंपली इंग्लिश में बोलो कि कैन यू पास मी टू द सेंट्रल रिजर्वेशंस, राइट. इन सब का एक सेंट्रल रिजर्वेशन फ़ोन लाइन होता है. उसमें क्या है, उसमें जब भी आप जाओगे तो दे विल गिव यू द रूम चार्जेस, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कोई डिस्काउंट है. आई मीन बेसिकली दे विल हेल्प यू विद द रिजर्वेशन, राइट. तो सिंपल सी बात है. ऑल यू जस्ट, सो देयर आर फ्यू टर्म्स दैट यू यूज़ विच मेक्स यू अ प्रो, राइट. उनको ये नहीं पता है कि आप कितने टाइम बाहर रह रहे हो. ITC वाले को ये नहीं पता होगा कि आप कितने टाइम मैरियट पे रुके हो. मैरियट वाले को ये नहीं पता होगा कितने टाइम आप हयात पे रुके हो, राइट. सो आपका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगा वही डिफाइन करेगा कि अगर आप मतलब पहली बार आ रहे हो या फिर इट्स लाइक आप आते ही रहते हो, राइट, या फिर इन सब होटल में आपके आना जाना है. तो ये, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है और आपको बोलना है कि भाई
नहीं ऐसे मत बोलना भाई सो जैसे कैन यू पास मी टू सेंट्रल रिजर्वेशंस, तो वो लोग बोलेंगे डेफिनेटली, एंड दे विल पास यू टू अनदर हर ऑपरेटर, राइट, वो रिजर्वेशन वाला होगा. And then you talk to that person, yeah, I want to know for the availability for these dates, etc., check in, check out, they will ask you, and all those details you can ask. Now once they have given you the details, let's take an example. Let's say this Marriott executive apartment has different levels of rooms. One is studio apartment, which is like around I think $15,000 or whatever. Then there is this 1 BHK which is like around 18,000 or 19,000, and then they have 2 BHK and 3 BHK which goes up to like around 26,000 rupees. ये रूट आई मीन सॉरी, ये रेट जो है इनको रैक रेट्स बोलते हैं. तो रैक रेट क्या होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है. सो यू नो दैट फॉर अ फैक्ट दैट आज जो आपको 15,000 का है वो कल 12,000 का भी मिल सकता है ऑन अ स्लो डे फॉर देम, और वो आपको 18,000 का भी मिल सकता है ऑन हेवी सीजन्स. तो वो चेंज ही होता है, वो आपको पता ही है. तो आप जब जैसे लेट्स से कि आप बोलो को उसने आपको ये रेट्स दे दी जो मैंने बोला. तो यहाँ पे आप बोलो कि ठीक है, यू नो व्हाट, लेट मी बुक फॉर 1st of May to 2nd of May, which is one night, obviously one, and double occupancy. Let's say you are coming with your wife, friend, girlfriend, whatever, whosoever. तो उसमें क्या है कि you will go ahead and say, I want these dates, etc. They will give you a rate, let's say 15,000 plus GST, well, let's say that comes up to 18,000 rupees. ठीक है. So for the next thing you say कि hey, can you please give me an offer, right? So they generally try to avoid it. They will say कि नहीं, I'm giving you the best rate and all that. So you say कि I travel a lot, so I know you can give me an offer. It is in your hands. If not, please check with your supervisor and call me back. ठीक है. एंड ऑल्सो लेट देम एल्स आई विल गेट बैक टू यू. उसमें ये दिखा रहा है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, राइट. आपका नीड नहीं है, आपको नीड ही नहीं दिखाना है. आपको ये ऐसा दिखाना है कि भाई ऑफर दे दे, अगर नहीं हो सकता सुपरवाइजर से बात कर, नहीं तो ठीक है मैं देखता हूँ. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ ये वो कोशिश करेगा कि आपको रुकवाने के लिए, बिकॉज उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट. दीज होटल्स जनरली गो एम्प्टी. इन लोगों के मतलब अगर 100 रूम्स है, हार्डली 20 रूम्स में गेस्ट होते हैं, बाकी 80 खाली रहते हैं हमेशा. सो इनके वो एम्प्टी रूम्स दे ट्राई टू फिल अप एज मच एज पॉसिबल. एक 1 night ऑफ रिजर्वेशन इज स्टिल फाइन फॉर देम, राइट. तो यू एंड देन ऑब्वियसली चेक इफ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट इन दीज होटल्स आर जनरली वेरी नाइस. तो इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट देख लो. दूसरी बात, उसके साथ साथ लेट्स से कि आप पहली बार मैरियट पे कॉल कर रहे हो, राइट. आप उनको बोलो कि हे, डू यू हैव अ लॉयल्टी प्रोग्राम. सिंपल सी क्वेश्चन है, डू यू हैव अ लॉयल्टी प्रोग्राम. दे विल से कि हाँ, वी हैव दिस मैरियट बॉन्डवाई ऐप एंड ऑल दैट. यू से कि कैन यू प्लीज रिक्रूट मी इन ओवर देयर. दे विल पॉसिबली डू इट जनरली. वो आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस लेके वो करवा लेंगे. सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू डू दैट, you are in a loyalty program. So the next time whenever this person, or whenever the next time you are going in a Marriott hotel or any, I mean let's say अब Hyatt का भी है. So Hyatt has a club, right. ITC का there is a I mean they also call it the ITC some gold member or whatever. Taj is called the inner circle. So you just tell them that include me in this, and they will do it actually. And once they do it, so the next time, इसका छोड़ दो, इसका तो आप पहली बार कॉल कर रहे हो तो that's fine. But the next time when you do it, it will be basically reflected that this guy is a part of the loyalty program, and you might get some extra benefits or discounts, which is important. So this is the simple communication, right? Now what happens is, let's say आपने वो स्टूडियो रूम बुक कर लिया और आपने बोला कि ठीक है भाई 15,000 में I'm sorted, right? आपको अभी क्या करना है कि आपको दिखाना नहीं है कि भाई ये मैं पहली बार आ रहा हूँ, राइट. आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन करेक्ट करना है. सो व्हाट यू डू इज़ यू टेल देम, हे आई हैव अ फ्यू रिक्वेस्ट्स. सो आप कुछ रिक्वेस्ट लगा दो, आप सिंपल. सो दे विल सी कि यस सर, प्लीज टेल मी व्हाट इज़ योर रिक्वेस्ट. सो रिक्वेस्ट लगा दो, आई नीड अ हायर फ्लोर. आपको ऊपर वाले फ्लोर में रहना है, राइट. आपको नॉट ऑन द 5th 6th फ्लोर और समथिंग, यू वांट टू स्टे ऑन द 10th फ्लोर, लेट्स से. सो यू टेल देम आई रिक्वेस्ट अ हायर फ्लोर. Then you can request for early check-ins and late check-outs, which you can definitely, they will ask you for a time, and you can definitely do it. The next thing you can request is an upgrade, and always request for this. Now they will say ki sir, this is up to availability, and you agree to it. You said I know that this is up to availability, but
please provide me an upgrade if possible, a complimentary upgrade if possible. uh, Provide me a higher floor, get me an early check in late check out. अगर आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपका बर्थडे है, आपका जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो उनका बर्थडे है, एनिवर्सरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, जो भी हो, सो ट्राई टू मेंशन दैट कि we are trying to celebrate a birthday, and if you can kindly request the housekeeping to assist us with some complimentary decorations, a cake etc. ये रिक्वेस्ट करो आप, इसमें आपके पैसे बच जाएंगे. अगर आपका मन है ना यहाँ पे आके केक काटोगे बर्थडे पे एक्सेट्रा, इफ़ यू बाई द केक इट इज़ गोना बी एफिन एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि यू गो एंड टेल देम कि भाई मेरा ये बर्थडे है या जो भी है, वट एवर सेलिब्रेशन यू आर हैविंग, एंड उसके लिए मेरे को हाउस कीपिंग को बोलो. सो इनका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है जो पूरा रूम वूम सेट करते हैं, वो पूरा डेकोरेशंस करके दे, एंड यू विल फाइंड द डेकोरेशन. आई हैव शोन यू इन द वीडियोस, लॉट ऑफ वीडियोस प्रीवियसली एज वेल. सो वो पूरा डेकोरेशंस आपको करके देंगे. एंड सेकेंडली यू ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ केक, एंड ऑल्सो जनरली इन रूम डाइनिंग से वो करवा देते हैं. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम. इनका टिकट साइज इतने बड़े होते हैं, एंड दीज आर सच बिग बिजनेसेस, गिविंग यू अ केक इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम. इट माइट बी अ स्मॉल वन, बट इट इज़ गोइंग टू बी स्टिल डिलीशियस, एंड एट द सेम टाइम आपको लाइक वो फीलिंग आएगा लाइक वंस यू एंटर द रूम और द स्वीट और वट एवर. सो these are a few things that you kind of need to take in consideration when you are getting in a reservation at a 5-star hotel or any luxury hotel as such. um, and once you also, so when you come in, like आप जब चेक इन कर रहे हो, जैसे let's say कि आपने फर्स्ट ऑफ मे का ले लिया, आप चेक इन करने के लिए आए हो, सो यू एक्ट यू बिलोंग हियर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो जो मैं बोला ना कि आपको ये दिखाना है कि आप हो सकते हैं पहली बार आ रहे हो, बट आपको ये दिखानी है कि आप बिलोंग करते हो वहाँ पे. सो दैट इज़ समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक डोंट, आई सी दिस अमॉन्ग्स्ट यंग पीपल, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज. सो छपरी बना मत करो. तो that doesn't make sense, because उनको पता ही चल जाएगा कि ये पहली बार आ रहे हैं या वट एवर. देन रेस्टोरेंट पे जाके डोंट डू समथिंग दैट इज़ गोना बी आई कैचिंग फॉर द स्टाफ एट्सेट्रा, राइट. So yeah, that's mostly it. I mean, those are general things you generally you follow, right? I am pretty sure. So my point is कि जब आप आ रहे हो, you belong, say that you belong here, and once you come in, and once you provide your details for check-in and whatever, do ask them, hey, I requested for a few, I had a few requests, sorry, I had a few requests, are they catered to, right? Did you guys upgrade me, etc etc. So whenever you ask these questions, these are very simple questions that make these people feel कि अरे यार ये बंदा तो ऐसे ट्रैवल ही करता रहता है, मतलब इसको पता है चीज़ें. So that's what is important. Just the communication is important, where you have to show that कि भाई मैं belong करता हूँ, and it's not that मैं पहली बार आया हूँ इन अ 5-star hotel or whatever, ऐसे मैं आके फाड़ के मत देखो इधर उधर कि ओह कहाँ है क्या है, because it's gonna be a nice place more or less. I mean, if you take simple examples of let's say the Royal Bengal ITC Sonar in Kolkata, right? You come to Taj Falaknama here in Hyderabad. You go to this place, any of these hotels, Connaught ले लो, आपका ताज पैलेस ले लो मुंबई का, ना. सो दीज आर वेरी वेल डेकोरेटेड. द लॉबी इज समथिंग, इट्स लाइक व्हेन यू एंटर आपको लगेगा कि अरे यार क्या मस्त दुनिया में आ गया, राइट, एक्सक्यूज मी. सो वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है. तो वहाँ पे अरे कहाँ पे ऐसा डोंट डू दैट. सो यू कैन कम बैक लेटर एंड डू इट और वट एवर. जब आप चेक इन मार रहे हो तो वो मत करो, तो उससे वो दे ऑब्जर्व एवरीथिंग. Always remember, these people are in hospitality, they observe every detail of yours, right? Try to get in offers, try to get upgrades, and try to get as much as possible out of your money. सिंपल सी बात है, आप पैसे दे रहे हो, आप 15,000 एक रूम का दोगे, उसमें से जितना हो सके मतलब वापस लो. एज सिंपल एज दैट. व्हेन यू गो फॉर ब्रेकफास्ट, पेट भर के खाओ भाई, इतना खाओ कि जब तक तुम्हें वॉशरूम का वो ज़रूरत ना पड़ जाए or something. Nobody will judge you on that, because these people know that inclusive of breakfast or whatever, like for example जो भी आपका room tariffs है, these are actually higher than usual rates, right? So they know that they are giving you that breakfast spread कि यार आप खाओ, this is included in your room tariff.
तो वो इम्पॉर्टेंट है. दैट वोंट मैटर. मतलब आप जब नेक्स्ट डे जाके ब्रेकफास्ट करोगे उसमें आपको कोई जज नहीं करेगा. बट वेन यू कम इन, दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. उस टाइम पे शो दैट यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स. यू ट्रैवल अ लॉट, मे बी यू डोंट, but you travel a lot and you belong here, right? That's most important. Yeah, so that I think that's mostly it. आगे मिलते हैं कभी again today, and I will catch you again later. I think this is a lot of gyan for one day. Video is going to be very long if I continue on this, so cheers, bye.